स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
Om Asato ma Sadgamaya Tamasho ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Aham Brahmasmi. Good evening everyone. स्वागत है आप सभी का to your day where you come to answer your own self. And somehow I feel like even the divinity finds its expression through your questioning and our answering. So from whichever time zone you have joined us, स्वागत है आप सभी का. Good morning, good afternoon, good evening. So as we are here for the question and answer session, of course, there should be questions first. And I don't see any hands yet. So anyone has any questions, please raise your hand so that we will start the Q&A session. Okay. So Hari bhai, let us talk. No one has any questions for this day. So let us talk for some time and then we can move out. Okay. So Sudha ji ने एक सवाल पूछा था. So Mukta ji has also raised her hand. Good. Chalo, so we'll start with Mukta ji. Sudha ji, okay. I'll answer your question. Mukta ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम मुक्ता जी, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? देखो, स्टिल शाइनिंग. वो तो है अभी तो. अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ काउंटिंग एंड डूइंग द जप? Counting and doing the job. Very good. Okay. And so many times we know of this thing called as ajap, जो हम मन में ही करते रहते हैं. तो वो तो वैसे भी चलता है whenever we are. So what is the significance and is it okay if we do ajap? Okay. Fine. So why do we keep a count? Why is it required? And what is the significance of ajap? So these are the questions. Okay, fine. So why do we need a count? First and foremost, you know you have kept your commitment. Yes or no? I have taken an oath, और मैंने प्रण लिया है, या तो मैंने जब आप पानी लेके ये करते हो कि for the next 1 year I am going to do this, or next 7 days I am going to do this, or next 21 days or next 40 days I am going to do that. If you don't have a number, you don't know if you have committed to that or not, and your mind will play games if you have not committed to that. What it will do? I am not told na I should do 100 or 1. So let me do 1 today. Oh, today 1 also cannot be done. Let me do 2 tomorrow, or rather even not tomorrow. After 5 days, I will do at time 5. Can you see, we will fail in our own commitments. Let's say, let me ask you a question, Mukta ji. Anyone in this room, just take this query. Let's say you have taken a loan from a bank.
And the bank has given you the freedom that you can pay any EMI that you want. How much will you pay? You see, very few will be there in prompt in paying, but rather majority of us, we will say, the bank has not told anything to us. So let us, आज ₹1 डाल देते हैं. EMI है ना? So ₹1 is okay. Can you really come out of that debt if you continue like that? You cannot. Right. Guruji, but I'm just saying that, okay, अगर commitment है, in that case, if we are doing over and above, ये तो ठीक है, आपकी बात सही है कि कभी मन विचलित होता है या मन की बात है कि we could be in doldrums, but those who are already in the practice, then what is the significance? Is Very it still good. important to count, or we can just do a jap? Now, very good. I have a question to your question. Yes. The Guruji. one who have already settled, why do they need to do a job? They're already settled. And how does it matter whether they did a job or not? Can you see, again, a mind plays. It places you at a high grounds and says, you see, you don't need any job anymore. And then you ask me another question about ajapa jap, right? Ajapa jap is a state where you don't even count that because you have settled in that now. You are not waiting for a certain time to remember that mantra or utter it for a number of times. But it has taken your own shape as a thought and it is appearing on its own. Now tell me, what preparation do you do to do the same jap as a japa jap? It is exactly like breathing. Yes or no? Yes. So in this case, especially when people are doing the counting one, first and foremost, their commitment. Second, there is another thing to that. Your mind or the human mind doesn't accept that he can get anything without doing anything. See, somebody has given me a t-shirt, on that it is also written the same thing. It has written like no gain, no pain, no gain. And that's how the mind works. And I feel like certain yogis has also taken it so seriously that they keep on giving pain to their bodies because they think then they will get the gain. No, it's not that way. You're torturing your own self. But again, in your mind, you see, for certain people, for just like a kid, if a kid is not sitting in meditation or not sitting in the puja, what do? छोटा बच्चा है आपके घर में और उसे कोई मतलब नहीं है भगवान से. हमें मतलब है इसलिए हम पूजा करते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है इसलिए वो पूजा नहीं करता. समझ में आ रहा है? हाँ, ये पहले समझो. We want something, that's why we do puja, but the kid doesn't want anything, that's why he's not bothered about that puja also. He is even free of that. But उसको हम प्रलोभन देते हैं. We give something, alluring things, right? If you sit, I am going to give this laddu to you, or that rupee to this much money to you, or I will take you to the garden or give you this toy. Yes or no? But वो एक संस्कार के लिए हम करते हैं ना कि initially. Nothing wrong in that. That's why there is a saying, na. There is a saying, because until and unless you know it, you practice it. And when you practice it, you will know it. Yes. Till that point, because, however, just tell me, Muktaji, one thing. As a person, we want to pass on that sanskar. It's a very good thing. However, do you think even if nobody told him about God, he would not realize God? No, he would, but most of the time for children, it is by observation and practice both when they see their elders doing it. Absolutely. So can you see, for that child within you, which doesn't knows what it is, you are given a mala to do the job. And certainly, there is another thing that can be added to that is a frequency. At what temperature water boils? From 70. 70 to 100 degrees. 70. It is exactly 100 degrees, not 70.
Not even at 99 it will boil. And after 100 it will not boil, it will evaporate. It is exactly 100. Now when you put water onto that pot, do you sit and watch how much degree has increased? How much, or the water boils automatically at that point? It automatically boils. You don't think about that. You don't go with a thermometer and put inside that and check, okay, it is coming or not coming or not. You don't do that, right? But you are doing it now because you have understood a science that if I put it on the fire, it will automatically boil. We don't worry about the temperature there. But in school, when you were there, they taught you or not, water boils at 100 degrees. Yes. So understanding, an idea should be there. Then automatically you learn that and it becomes a automated process. You don't sit there to judge it or see it. That is another way of doing it. Because we don't understand the power of the mantras, we are given a certain amount. जैसे कि जल 100 degrees पे boil होना शुरू होता है. At a certain numbers, you also create that kind of frequency and vibration that takes you into that realm. और वो मंत्र प्रभावशाली होने लगता है. And mind you, as I said, it doesn't matter whether you have kept the count or not, water will boil. और अगर आप अजाप अजाप करते हो तो उसकी सिद्धि और जल्दी होती है. Are you getting that? So Yes. ajapa jap is just like taking breath in and out. Yes. So every moment of your life has become that jap. So ajapa jap obviously is a much better way. However, आपने कुछ ऐसा वो अभ्यास डाल दिया है. हमने कुछ नहीं डाला है. वो आप तैयार थे, वो आपके अंदर बजने लगा. वही है. तो इसलिए ये प्रश्न आ रहा था क्योंकि अभी ऐसे लगता है कि नहीं वो अजापा जाप में क्या है, आंखें भी बंद है और हम उसी में ध्यान लग जाता है कई बार. So it is good. You see, if you have reached that kind of stage, मैंने even on Sunday also I told the same thing, na Mukta ji. There are two ways. Either you become Shiva or you take the path of Shakti and do all these things. And the day you settle yourself in Shiva, no need of the path of the Shakti, because Shakti is no different than Shiva. So now think of. Yes. अगर अजाप अजाप हो रहा है, just continue that. ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच. एक अंडरस्टैंडिंग आ गई अब. Thank you. Guruji, I have a guest with me. Pranam. He is 92 years old. He is 92 years young? 92 years young. Okay. Correct. So that is a good space, I believe. He has been listening to you for a couple of sessions now. See, he has become God and just listening to us without appearing. Yeah, it so happened that previously I just could not at that point in time. So today he was anxiously, eagerly waiting, and he's here. Oh, thank you. Thank you so much. Pranam Guruji, thank you so much. Pranam Mukta ji. Deepika ji, please unmute yourself. Acha, Sudha ji nahi hai? Okay, chalo. Now Deepika ji will ask the question. Deepika ji, are you there? Deepika ji. Pranam Mahadev. So God mode, huh? No. Mahadev, actually, I have the same question like Mukta ji. You told before that. You told before that for path of Shakti, you'll have to do all the practices, but you can simply become Shiva. But how do we become Shiva? How do you become Shiva? How many of you are interested? I am. शिवरात्रि आ रहा है, हो जाओ. नहीं तो शिव जी को पूछो उनका नाम शिव कैसे पड़ा, वो बता देंगे. Okay. Very simple process. Go to the courtroom, do an affidavit, change your name.
Easy, na? Oh, you don't want to change your name as Shiva. You want to become Shiva, right? Am I correct? Changing name is easy. You don't even have to go to any courtroom. You can have a button here, rename. And you rename your names, Shiva. But literally, Mahadev, I mean, when someone looks at you, like, it's not like simply calling you Mahadev, like, it comes from the heart. We feel you are Mahadev. So, okay. how to become Shiva like that? I mean, when we look at Shiva, I don't look anyway like Shiva. I don't have a jata. I wear all fancy dresses, except the Rudraksh. Nothing is it's similar. not the appearance, Mahadev, I'm talking about. Now you are answering How your to become question. Shiva. You're actually answering your question. What did you say? It's not about the appearance. Yeah. So why are you waiting for the appearance of Shiva? What if I say, like, you need not become Shiva? Because you are Shiva. And all that you have to throw away is what is not Shiva in you. Just like appearance. You are a female, so I cannot be Shiva. Throw that. You are Shiva. I don't have a jata. See? I threw that away. But I I said, have to, I'm still without that, I'm still Shiva. I have to live in that reality, no, Mahadev. Like, how Which do reality? No, you have to stop That- living in illusion. You are already in reality. Stop living in illusion. Now see, where are you living? Are you living in reality or in illusion? You are in illusion, stating like you are not Shiva. I say, can you be? Can any one of you be here, present, without Shiva? Possible? Possibly nahi hai. Because every single speck dances to his self because of his cosmic dance. And every cell in your body is also dancing the same cosmic dance. Now, who are you? Now, I ask you one more thing. Deepika ji, a very amazing question, because many of people have been waiting for that answer. So thank you for asking. Thank you for being Shiva and asking Shiva. It is said Parvati came and asked Shiva because she wanted to help others to know Shiva. So you are asking a question today about Shiva then. So let me tell you. All of you, you always stand with your mind and question Shiva. I say, stand with Shiva and question your mind, and you will realize you are Shiva. Can you see, you are always standing opposite to it. आप हर समय ये ढूंढते रहते हो कि मैं शिव क्यों नहीं हूं. मैं ये कहता हूं कि वो ढूंढो मैं शिव क्यों हूं. You are always asking, na, why I am not Shiva, why I am not Shiva. You are giving all the things why you are not Shiva. But I say, tell me, what are the qualities that you already have that you can say, because of these qualities I am Shiva? Tell me. Speak. What are the qualities of Shiva in you? don't know. Can you see, when you are Shiva, you don't talk about Shiva? Because you are. As I said, in the morning, you just don't wake up from the bed and search, where is Deepika? Do you? No. You don't search Deepika because you are Deepika. Whom are you searching? You are searching Shiva because you think you are not Shiva. I say, if you accept yourself Shiva, you will not search for Shiva also. ढूंढता वही है जिसको डाउट है. जिसे डाउट नहीं है वो ढूंढता भी नहीं है. Because I am.
And then we just sit down and question. I have situations in my life. I have issues. Then you say, I have a son. I have a family. Then how can I be Shiva? Deepika, you forgot. This physical body has all this. What about you? Now think. I gave you a hint. Now stand with Shiva and question all that you think you to be. Everyone in the room, go on a try. All that you believe yourself to be, जो अपने आप को मानते हो, question all that rather than questioning where is Shiva, how will I meet it, what will happen to me, all that. I say for a moment question all that you think yourself to be and you will find where you are standing. पूछ के देखो, अगर अपने आप से अलग नहीं हो गए तो बताना. If you don't find differentiation between you and the body, will let me know now. I'm here right now sitting asking you to do it live, and not tell like tomorrow morning I will ask. No, now check and tell me if you find yourself. What happened to your thoughts? Why do you go blank? So many things were running. And suddenly I said, question all that have been keeping you busy and you become silent. And that's what I say, Shiva is silence. Did I told any mantra? Did I ask you to stand on one leg and do a jap? No, I simply asked to question all that from the point where you are questioning Shiva. And you see your illusion falls in front of you. Now tell me. Do you need meditation? Shiva himself is meditation. Now ask. Any questions? That's what I say, na Deepika ji. You can handle my answers. You cannot handle my silence. Because the more and more I keep on and stay in silence, it will be unbearable for you to contain yourself in that physical limitations. You want to try that? Now, live? Yes. Ready? Okay, so from here on, I will not be speaking for certain time. And you just experience my silence and you see what happens to you. Ready? Every one of you, those who had the same question. No meditation, nothing. Just sit in my silence. That's what I say. Ready? I said silence. I didn't ask you to listen to my songs.
So Deepika ji, tell me if you don't know who Shiva is. Now tell me what you need to do to become that. What are you experiencing? I think Aditi ji can answer. So Aliva ji, bliss is a quality of? Of course, Ananda. What did you do to be happy? क्या किया आपने to come to this state? How many of you feel thirsty? Like, okay, this is something like, it's not a physical thirst actually, but you feel thirsty. A fluttering here, and it seems as if like it is pulling something, right? You keep on swallowing your saliva, but it still feels like, oh, I should, but it's not thirst. It's a longing. It's a pulling towards that state. Now tell me if you don't feel that. And how can all the people in the room feel the same way, Shivji? Yes or no, Aswin ji? So how come we can all experience the same thing? And this is what we are. You know what we did, Deepika ji? In my entire talk, I actually separated what you are not, and you felt yourself. That's how you become Shiva. Every morning, I don't wake up with a torch in my hand searching for Shiva. I wake up as Shiva. मैं हाथ में कोई मशाल लेके ढूंढने नहीं जाता हूं. नहीं, राजन जी? You just wake up as that. No, tonight I go to sleep as Shiva, wake up as a poor little human being. नहीं अपाराव जी, यही होता है ना? Every Wednesday you become Shiva, and then suddenly Shiva sleeps and slips. And again in the morning, where is Shiva, where is Shiva, where is Shiva, where is Shiva, how can I be Shiva? फिर माला लेके बैठ जाते हो. I say it is not difficult. I say you are trying too hard not to be Shiva. I say becoming Shiva is not hard. And Shiva Guruji, as science says, it takes more muscles to be angry rather than to be happy. But people choose to be angry rather than being happy because they want to do some hard work. कौन सी शिव का बात कर रहे हो? बताओ अगर आपके पास नहीं है तो. नहीं है दीपिका जी? Not able to talk much. So what should I call I you? wonder how we are talking every day. Because you are still carrying an image of Shiva in front of you. You say, okay, ऐसा दिखता है तभी शिव होगा.
अरे शिव कभी लड़की बन के भी आता है, बच्चा बन के भी आता है, बूढ़ा बन के भी आता है, पतला बन के भी आता है, मोटा बन के भी आता है। शिव किसी भी रूप में आ सकता है। He can come in any form. Sometimes it comes as a cloud, sometimes as a sun. And people throughout the day keep on checking the photographs and it keep on changing until finally in the night they realize what this photo was. ये देखो अपाराव जी बोले आज दीपिका बन के आए. Why not? See, Deepika ji, he is able to see him in you. Why are you not able to see yourself? Because we always stand against Shiva. We always keep on trying to find an excuse why I cannot be Shiva. And I excuse those excuses that tell me that why I am not Shiva. I only focus on what has made me like that. इसीलिए मुझ में कोई द्वंद्व नहीं है. There is no fighting in me. And as the thought that you have, जो मन होता है ना इंसान का, जो मन होता है वो हमेशा द्वंद्व में रहता है. It is always fighting. The thoughts are always fighting with each other. So you have a choice here. You can take one thought, whether I'm Shiva or whether I'm not Shiva, and fight with that. Because if you say I am Shiva, immediately you see it will create 100 questions why you are not. And when you say no, I am not Shiva, then again 100 questions like me asking you will be there to tell you that yes, you are Shiva. But there is a way out. Don't take sides. Get out of that place. I don't even care whether you are fighting to be Shiva or you are not Shiva. Even I'm not there. I'm standing and watching. मुझे कोई पक्ष भी नहीं लेना है. या तो जो पक्ष लेते हो उसके तरफ खड़े हो जाओ. Just take that part and stand with that. That absolutely I'm Shiva. That's it, done. Or absolutely I'm not Shiva. That's it, done. No fight. But that tug of war goes on. I feel today I'm Shiva. Amazing, ecstatic. Tomorrow I don't feel like Shiva. I'm worried. I'm depressed. I have never seen a depressed Shiva, you know. उसे शिवा नहीं कहते, उसको रुद्र कहते हैं. लेकिन उसके रोने में भी रुद्राक्ष बनता है. आपके रोने से क्या बनता है? मैं कहता हूं अगर किसी दिन रोना भी पड़े, even if you have to cry, cry like Rudra, so that even your tears become रुद्राक्ष. आपके even the drop of a tear becomes something of greatness. But we cry for every dog and cat. How can it become like that? शिव किसके लिए रो रहा था? अपने पत्नी के लिए नहीं. शिव उसके लिए रो रहा था जो जगत माता है. She was not crying for his wife. He was crying for the goddess who has created the entire creation. And he was thinking, if the creation, the mother itself is not there, who is going to take care of the creation? That's why he was crying. His crying was so great that it became Rudraksh. And we cry for a dog and a cat, and a pen and a pencil, a eraser and a cutter. नमक का पानी बनता है इससे. Only salt, water. So choose. What do you want to be? Take a choice. Make it. Stay there. Don't move. No, we enjoy that play, na? Kids go climb the stairs, go onto the top, and then slide down. So every Wednesday, you climb the stairs, go onto the top, go to sleep, slide down. Enjoy that game, na? I don't have any problem. Because as that swing or as that slope or as that sand castle, I know I'm not going anywhere, but the kid will grow up. And the day it grows up, it will leave everything. मुझे कोई जल्दी नहीं है. समय आपका बीत रहा होगा, मैं समय से परे हूं. कुछ नहीं बीत रहा. I will also see how long you take to become, realize what you are. मैं कहीं नहीं जा रहा हूं.
I'm not going anywhere. If you want to play till eternity, you will find me standing there till eternity. And of course, this is not the first time I'm talking, right? क्या मैं आपसे ये पहली बार बात कर रहा हूं? No. But you listen, you learn, you practice, you realize, then you forget. And then come again and, oh, I forgot. No, it's not only about you, it's about me also. क्योंकि समय ऐसा भी था जब आप मुझे बता रहे थे और मैं आपके जगह पे था. I was sitting at your place and you were the one who is narrating all that. That's the play. But the question is, how long? I can wait till eternity. How about you? Can you play till eternity? Now, can you see? You are sad and happy at the same time now. Yes or no? Tell me if you are not feeling the mixed emotions. Then how can that happen with just talks? Because it is not just mere talk. It's making you realize that this is not the first time I have been speaking. It's not the first time you are listening. So that's why you connect. So who are you? Question? What was your question, Deepika ji? Anybody remembers? But Suma ji has to remember because she has to narrate the entire thing again. Yeah, Deepika ji, everybody is waiting for your question. I'm not able to speak, Madhu. So no, I'm not done. I will ask you a question now. If you don't have a question, then I will ask a question. Deepika ji, can you tell me how to become Shiva? Answer. What should I do to become Shiva? Processes? Anything? Nothing. Can you see, to become Shiva, you don't have to do anything. In order to become a human, you have to do so many things. Anyone has any questions? How to be? No, it's not about how to be Shiva. Just be Shiva. Can you see, you suddenly everybody went into some other place. And now your mind is questioning, what is he saying? What am I actually listening? What is the correlation? But I'm not understanding anything, but at the same time, I know I understand. How many of you feel like that? That's the cosmic drama. Because always you have been with the mind and thinking with the mind, but this time you are not with the mind. That's why the mind is wondering, where are you now? He's not asking, where is Shiva? So from this day on, Deepika ji, from where, which standpoint are you going to stand and speak?
Choose. Absolutely, Muktaji. Even after some time, that two will disappear because only one will appear. There is no one but one. And the one is that one. And that one is you. Amazing. How many of you feel like meditating now? You say, no more talking. Let us sit. Just sit like this for some more time. And just बहुत हो गया. I think it's already happening. अब नहीं लगता कि बहुत हो गया खेल. Too much of play has gone into play. No more play. Just leave it and just sit and just be and just, that's it. Right, Shiva Guruji? And nothing is required. And my entire work is to make you feel even if you don't see this physical body. That's my work. Nothing less than that. Because people ask, what do you want? I said, I only want one thing. And that one thing is nothing less than Shiva itself. कमलेंद्र जी, मुझे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहता हूं शिव से कम कुछ नहीं चाहिए. Nothing less than Shiva is needed. And all that is needed is Shiva. That's it. Then why are you all smiling within yourselves? किस बात पे इतना लड्डू फूट रहे मन में? Why that crackers growing on within you? You see, this what happens, Ashwinji. When that veil of doubt falls, you laugh at your own self, stating, pakda liya, pakad gaya. You have caught me today again. No, every time you come here, you get caught. And then again, next day, you come with another costume. But you remember that story, na? Aparavji, that story of that person who went to buy that TV into the shop, but it was a micro oven. Every day he changed his clothes and went there, but the shopkeeper used to caught him. No, हमको TV नहीं बेचना है. So आप भी मेरे सामने वही करके आते हो. You keep on changing your attire, but you forget that what you are searching is not reality. And by that search itself, I know that it's not the truth. Because I don't see you with your clothes. I see you from where you are coming. इसीलिए पकड़ में आ जाते हो. Because for me, I don't carry one image. For me, every image is Shiva. याद है ना सावन का अंधा? The person blind in the month of Savan Mas always sees green. और हम शिव के अंधे हैं तो हमको वही दिखाई देगा. And finally, a short story, Deepika ji, and I will move on to the next question. Because this is my pet subject, you know, when you talk about Shiva, that's my pet subject. So I keep on speaking. One fine day, it happened, a person, a poor fellow, and he has not seen any image of Shiva anyways. And one fine day, everybody told that Shiva Bhole Bhandari hai, he is much more benevolent. ओघड़ है, मतलब बिना मांगे भी दे देते. Even if you don't ask, he will give. उसे ओघड़ कहते हैं. ओघड़दानी कहते हैं ना सुधा जी उन्हें. हाँ, so जो बिना मांगे दे दे उसे ओघड़दानी कहते हैं. And all that he heard, and he said, okay, finally he makes a list of things that he wants in his life. And now goes
onto Kailash to find Shiva so that he can ask all these things. Poor fellow. So he wants a big Mercedes Benz or a big house and 4-5 people working for him, lot of bank balance. और क्या मांग सकते हो, यही पूछोगे ना. हाँ, प्रदीप शायद बोलेगा कि मे बैक चाहिए. ओके, मे बैक, बट स्टिल इट इज ए 4-wheeler कार. चलो, डन. सो जाता है, he goes, and lo and behold, he reaches Shiva. But he doesn't know who Shiva is. Shiva is sitting and goes there and inquires. शिव के गण जो होते हैं ना, नंदी, भृंगी, पिशाच, प्रेत, and asks, where is Shiva? तो प्रेत जो गण था, इसे, अरे अंधे दिखाई नहीं रहा, वहां बैठा है ना, he's sitting there, can't you see? I says, oh, he's Shiva. He says, yes. Then he feels very sad, turns around and walks away. घूम के वापस चलने लगता है. तभी शिव आंख खोलते हैं. शिव opens his eyes and says, hey, hello, where are you going? He stops and says, nothing. Then Shiva says, but you came na, to ask something. He says, I came to ask, but by looking at you, I don't think you can give anything. So better I go. आपको देख के लगता नहीं कि आप कुछ दे पाओगे, इसीलिए बेटर है कि मैं वापस चला जाऊं. Can you see, Deepika ji, this person is not blinded by Shiva, he is blind to Shiva. वो संसार के मोह से अंधा है. He is blind with the worldly desires. इसीलिए उसे शिव नहीं दिखता. उसके शिव के कपड़े दिखे और उसको लगा कि शिव कुछ मुझे नहीं सकता. People many a times look at you in a certain manner and by just looking at your attire they think you cannot give. तब देखना आप शिव से अंधे हो गए हो. शिव के लिए अंधे नहीं हुए, शिव से अंधे हो गए हो. You are blind to Shiva, not blind for Shiva. But you can only see the worldly things. वो इंसान का हाल वही था. वो संसार के चीजों को देख सकता था, शिव के प्रति अंधा था. मैं कहता हूं अगर संसार के प्रति अंधे हो के शिव को देख लिए ना, संसार भी मिल जाएगा. You will even get this and you will get that. Yes or no? Then whether it is a Mercedes Benz Maybach or a Bugatti Veyron, doesn't matter. तब प्रणीत बोलेगा ए बुल इज काफी है. एक बैल भी मिल गया तो भी काफी है. So now Deepika ji, what is your question? Everyone that questions that how I can become Shiva, I say you are blind to Shiva, you are not blind for Shiva. क्या हुआ? शिव से अंधे हो या शिव के लिए अंधे हो, ये बताओ. Are you blind to Shiva or you are blind for Shiva? Choose. If it is for, you are for Shiva. I will remove that word blind also. Are you getting that? You are blind for Shiva. I will remove that blindness. You are for Shiva. You are Shiva. Even I will remove that for. That's how you become Shiva. Got your answer? First of all, you should be blind for Shiva. Then remove one word from that. Remove that blindness, because Shiva itself is not ignorance. It itself is realization. So your blindness is gone. You can see it clearly. Illusion is removed.
Then you say, I am for Shiva. Then Shiva says, remove that for. Why that distance? I am Shiva. How do you become Shiva? That's the path. मुश्किल है? Got your answer? Sure. And how innocent you people are, na? You know all these things, but you still play. I don't know what happiness you get by making me speak so much. That's your play. माया मेरी नहीं, आपकी है. इसलिए मैजिकल में नहीं, आप हो. Is all you're doing. So Deepika ji, how do you feel? And how about other people in the room? शिवरात्रि हो गई. Now tell me if you can separate Shiva from yourself now. Don't want to. Har Mahadev. Can or not, I don't know, but don't want to. So be there. If you are going to sleep like a Shiva, wake up like a Shiva only. Not that lost in transition of sleep. जैसे ट्रांजिट में लगेज खो जाता है ना, वैसे आपका शिव खो जाता है रोज रात को. Don't. So don't worry. Today you feel like that. Again tomorrow you will wake up and say, oh, I have another question. I said, very good. Come on, Shiva. Let's talk. Can anybody tell me what exactly happened to you and what exactly I told? Anyone can narrate that? What all I spoke? But does it feel like you have not got it? You have not felt it? Because appearance can be illusion. Experience cannot be. देखने में गलती हो सकती है, महसूस करने में गलती नहीं होती. So are you seeing Shiva or you are feeling Shiva? He's a very dangerous guy. Absolutely, I agree to that. Nahi, Deepika ji, very dangerous. Yeah, because I don't allow you to remain humans anymore. And that's why I'm very dangerous. Ye sare, among all these sane people, one mad is there who doesn't allow to be a human. And that's my madness. And welcome to this madness. Thank you, Deepika ji. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. Means हर एक जो है वो महादेव ही है, वही बोल रहे हो आप. Everyone that you see is Mahadev. That's what you are saying. Her and her are Mahadev. That's what I say. आप उषा जी को देखो या विद्या जी को, हर Mahadev. And now some people are counting how many Mahadevs are there in the room. धन्य हो प्रभु. धन्य हो. Amazing you are and amazing are your creation. I don't call you even human. It should be a species, you know.
But still, what to do? We have accepted you the way you are, so I have to keep on doing what I have to do. Thank you. Thank you so much, Mahadev. Thank you, Harianna. Thank you, Deepika ji. Vidya ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम विद्या जी। जैसे कि अभी बात चल रही थी, in January session someone asked the question about if I am the Shiva, and then why so much problem is there, why the physical or mental someone problem is going on. So at that time you answer that just feel like a Shiva, कि whatever the injury I have or paining I have, just ask him कि ये क्यों है, why my hands is paining, why my legs is paining. So I'm just sharing my one experience. I'm suffering from the arthritis when I'm 12 years old. From that means near about 30 years back, I'm suffering from the arthritis. Lots of medicines. Some people are calculating your age now, you know. That's how the mind works. कुछ काम धंधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई सीख ली है तो जाके बाहर बोर्ड जो भी लिखा हुआ है सब पढ़ते रहते, कोका कोला, टूथब्रश, रूपा, माय गॉड. Okay, go on. So from that day, I just stopped taking any painkiller. Even I didn't use the kneecap because my daily routine is with kneecap. Now, from I think 1 month completed, I never use one single day kneecap. Still, my legs are not paining. That's your blessing. Even the nowadays in a school, annual day is going on. I'm dancing with the students. Late 2 hours, still my legs are not paining. Wow. And I am the arthritis patient. नीलिमा जी, she is the first mathematics teacher who dances with the students. हमारे teachers तो हमको नचाते थे, especially the math teachers. खूब पढ़ी है हमको. It's all your blessing, Guruji. The way you say, just tell everything to a Shiva. I just started, and from last month I've experienced no pain. My God, you see, I might be a hero for you, but the medicine companies will be saying, "ये villain कहाँ से आ गया?" We don't care about them. Bless. आप किसी का रक्षा करता बनते हो तो किसी का संहार करता बन जाते हो. नहीं, they have enough, huh? All of us have enough. Yes, and Guruji, my question is, just we finished with the 2 parts of the Anatnath. So while practicing, daily I just listen the different sounds. It is my illusion or real, I didn't get it. So what? See, now a dog is barking behind you, right? Yeah. So differentiate between the dog's barking and another sound that must be within you. But that sound, whatever I'm listening, it is not the outer sound. That is the inner sound only. Okay. So what is happening with your inner sound then? Inner sound, the first day, I just feel like somewhere the one string harmonium is going on. That is the last. It is lasting for the 10-15 seconds long. Sometimes I feel that the tabla is going on. Then sometimes actually nothing is there. Only that black hole is going inside, and it's not stopped. It is only the black hole only, no sound, nothing else there, only darkness. Vidyaji, for achieving the state that you are speaking of, the Zen monks go for 14 years of sadhana. No, please. No, you go do your research, na. Do your research, you will find that whatever I'm speaking. So if that is happening, we are happy for you. But it's my illusion or real, I don't differentiate it. Now, very amazing thing. I said, no, we question the reality, but accept what is unreal. Always. Look at your hand again. Is this really your hand? Yeah. Question now. Look at it very carefully. And if you look at your hand very carefully, it will feel like as if you are seeing it for the first time, you know? Yeah. Check.
We never doubt the doubt that why is it asking why Shiva is there or not, but we just doubt Shiva. No, it's not a doubt. Shiva is not a doubt. चलो Shiva कम से कम वहां से तो निकल गए. Now Vidya ji, these things that is going on right now, it will ultimately take shapes of variety. As I said, no, people have narrated it as 10 different sounds. However, it is more than that also. And in these variations, you will start listening to certain specific sounds. जैसे अभी आप तबला का बात कर रहे हो. At times people hear it as a flute. At times it's just a machine moving. At times it's just like a water rushing. It might be a sound of a bird. It might be a sound of a cricket. And at times it will be a sound like a damru. And ultimately all that you will listen is just Om. And that's your journey. And when you continuously start listening that Om going on, that means you are listening to the pranav, means the first, the pratham, the first word. And the first word came from the mouth of God. And then what will you hear? You are listening directly to God. Who can listen to God? As I said, only God can listen to God. Only a God can see God. May it happen to you. और एक कंप्लेंट करना था. Very good. Either it is not about you, लेकिन जो आपके साथ हमारे अहम ब्रह्मास्मि फैमिली के मेंबर्स है, either they can post one thing before celebrating any program. Can you join virtually? Especially Haryana, Alibaji. So those complaints are for Hari Bhai, na, not for me. Na. Chalo, I'm free. Yeah, not for you. That all participants, I'm saying, जो भी मुझे वीडियो में दिख रहे हैं, so prior celebrating the program, they can ask us, na, can you join us virtually? Very good, very good. I also say the same thing to them. Even they don't tell me and they just rain from somewhere on me. Yeah. Even that last bhajan you sing, they can ask us, na, can you join this virtually? We can enjoy it. And you know, I actually asked Hari Bhai to go live, but he didn't. Catch hold of him. अरे बाप रे मानस जी अब आप मेरे को कॉर्नर कर रहे हैं. Vidya ji, definitely next time onwards we'll make sure that we will be live. Where it is a small program, only 5 minutes, then also we enjoy, but we have to. Last moment पे बोल दिया ना, our eyes are only that on that group only. What's coming? Sure. We'll make sure. Thank you, Guruji. So Vidya ji, you actually told on behalf of many people. कितनों की भड़ास निकाल दी आपने. That's in everyone's mind, na? And we are Shiva, na? So we know. Wow, amazing you are. Thank you for accepting. Chalo. Thank you, Vidya ji. Sudha ji, please unmute yourself. Sudha ji. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम. एक तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वही पूछना चाहती हूँ. उसके अलावा एक क्वेश्चन और है. हाँ, तो मैं पहले अपना कौन सा क्वेश्चन पूछूं, आप बताइए. कोई भी. मैं ये कुछ भी हो, उत्तर वही होगा. मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो कहते हैं चंद्रमा का इफेक्ट होता है बॉडी पे, जैसे आपके थॉट्स अमावस्या को कुछ और होते हैं, जैसे वो डिके होता है, पूर्णमासी को कुछ और होते हैं, क्योंकि ये समुद्र के उससे भी देखा जा सकता है, वेब से. तो जब हम शिव की पूजा करते हैं तो चंद्रमा इफेक्ट करता है कि नहीं, और फिर किन पे इफेक्ट करता है? जिनका जो मॉरली स्ट्रांग होते हैं उन पे इफेक्ट नहीं करता क्या, या जो इमोशनल होते हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट करता है? मैं ये जानना चाहती हूँ. वेरी गुड क्वेश्चन सुधा जी. Now, if you are on this realm of
this planet, अगर ये धरती पे हैं हम, so it has certain ways, right? Right. So just like you are in a house and certain things are there in your house. So in this world, there are certain things. Even the moon is a part of it. Just like the earth has the gravitational pull, moon has its own gravitational pull, right? However, jo people, I have to tell you, your question was very simple and I will answer it very simply. The full moon is just like a magnifying glass. If you are mad, you will get more madness on that night. If you are sane and you are sitting in meditation, it will enhance your meditation. If you sit and just waste your time, it will help you wasting that. It is not about the effect of the moon, it's about what you are doing at that moment will be magnified. आप और मैं तो पागल की तरह नहीं हो रहे ना फुल मून में. आज तो है, अभी इतना सुंदर फोटो डाला था अपाराव जी ने. हाँ, आज पूर्णिमा का चंद्र है, पूर्णिमा है. So we are not talking like mad people. Anyone in this room is mad? No. But just go to the asylum. Go to the mad people and you'll see they will be dancing today. उनके लिए आज शिवरात्रि है. They get more activated. But for us, it doesn't matter because you are not, it is just enhancing what you are. Now, did you realize why did I ask you to sit in silent for some time? When Deepika ji asked me the question. You're getting your answer now. What was the reason? Because I know there is something out there that can have an impact on you. So sitting silently for even a 2 minutes time can really get you into that space. And many people are there, those who do that meditations, full moon meditations, right? Even we should start something like that. इसका मतलब जब फुल मून हो तो मेडिटेशन हमें करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए. You should do. इसका मतलब हर पूर्णमासी को मेडिटेशन करना चाहिए. Yes, you should enjoy that, right? So that you don't go mad, you know. अगर आप गुस्से में हो ना, then you see what impact it has. You will become angrier on that day. और अमावस्या को क्या इफेक्ट होता है इसका गुरुदेव? एक भगवान का दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है, दोनों का भी मेडिटेशन है. मेरा एक क्वेश्चन और था इसी के अंदर कि जो थोड़ा प्रैक्टिकली हो, मतलब मॉरली स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं, मतलब अपने काम से काम रखना, कैसे काम निकालना है वो सब जानते हैं. और कुछ लोग होते हैं वो इमोशनल होते हैं. तो क्या ये वाले जो टाइम होता है इस चीज पे भी इफेक्ट डालता है, जो बंदा ज्यादा इमोशनल है? हाँ, एब्सोल्युटली वही होगा. देखिए सुधा जी, बिकॉज चंद्र क्या है? मन का कारक है. मन का कारक है चंद्र. So he has more impact within on your emotions. That's why it has, or what we narrate as moon, as full moon, is not that the reality. ये physical moon है. But there is something much bigger than that behind it. That's the force. एक चंद्र है, एक चंद्र की शक्ति है. एक आप हो, एक आपकी शक्ति है. By looking at someone, can you tell how much weight he can take up? No, क्योंकि शक्ति दिखाई नहीं देती. जो दिखाई देता है वो शरीर है. What we see is the physical moon, but there is a, जो आपने जैसे कहा, the reason behind your emotions, मन का कारण जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा का इफेक्ट आता है. अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, आप देखो लोग उसके लिए क्या क्या करवाते हैं भी है. मून स्टोन पहनो, ये पूजा करो, ये जाप करो, करते नहीं करते. But all that thing is, my question to you is, Sudhaji, there must be something specific for which you are asking this question. So ask the specific question. किसके लिए पूछ रहे हो? अगर आप जान सकते हो तो जान लीजिए, मैं पूछूंगी नहीं बस. नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहती हूँ. चलो कोई बात नहीं. So whatever it is, it only magnifies the thing that you are going through.
उतना ही है, इफेक्ट उतना ही है। समंदर है, उसमें भी उछाल आ जाती है। इट इज मैग्निफाइंग इट्स वेव्स, यस और नो? So whatever you are going through, it magnifies that. And of course, I request everyone, whether we do to it together or not, every full moon night, try to sit at least for 15, 20, 30 minutes, and if possible, in the moonlit space. And somebody was asking, I feel like I should be doing meditation under the moonlight. Do. अच्छा, ये जो शिव की पूजा से और चंद्रमा से कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि उनके तो सिर पे धारण है चंद्रमा, तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो इसका इफेक्ट निगेटिव नहीं होता फिर? बिल्कुल होगा, न्यूट्रल नहीं होता? हाँ, देखो वही चंद्रमा जो सबके मन के ऊपर भारी पड़ता है, वही चंद्रमा शिव के लिए ज्वेलरी बन गया। Can you see the same thing that might be pulling you and disturbing you, that also becomes an ornament for you? It doesn't have any power on you. तो ये होता है शिव की पूजा का महत्व। Can you see, मन से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है आज की दुनिया में? Who can be more powerful? Because ये आप ही का मन है जो आपको अच्छा लगता है, यही आप ही का मन है जो आपको बुरा फील कराता है और आप कुछ भी कर जाते हो। और शिव कहते हैं मेरे जैसे बन जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। doesn't has any impact. बताओ हमारे ऊपर चंद्रमा क्या इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ, एक ही इम्पैक्ट कर रहा है सुधा जी, हमको चमकने में और ज्यादा मदद कर रहा है। नहीं गुरुदेव, आपकी बात नहीं कर रहे, मैं कॉमन। फिर अलग कर दिया आपने मुझे आपसे। You became human again. नहीं देखिए, आप कुछ भी कहें, ये तो है, लेवल तो फर्क है ही, इसमें कोई शक नहीं है। वो लेवल कब हम पहुंचते हैं हमें मालूम नहीं, पहुंचेंगे जरूर, लेकिन अभी तो फर्क है लेवल। कुछ और भी लेवल फर्क है जो और नीचे हैं अभी, कुछ नेचुरली है, तो मानी हुई बात है गुरुदेव, सब इक्वल नहीं है। जैसा आप बोले, मेरे लिए तो सब इक्वल है। आपके लिए सब इक्वल है, ये आपकी महानता है, ये आपके लिए सब इक्वल है। नहीं तो वहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। आप सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं और हम लोग नीचे हैं, तो चढ़ने में टाइम लगेगा। बिल्कुल गलत बात सुधा जी, मैं सीढ़ी के ऊपर नहीं खड़ा हूं, मैं ही सीढ़ी हूं, आप उस सीढ़ी के ऊपर खड़े हो। ये भी आप सही कह रहे हैं। आप हम लोगों को ऊपर ले जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूं वो मंदिर का भगवान बड़ा नहीं, वो मंदिर का सीढ़ी बड़ा है जो भगवान तक पहुंचा देता है, और हम सीढ़ी हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, आप सीढ़ी हैं, तभी हम लोग चढ़ पा रहे हैं वाकई। आराम से चढ़ के जाओ, कोई बात नहीं है। वैसे मैं चाहती हूँ आप सीढ़ी ना बन के मतलब गाइड बनिए, तब आराम से पहुंच पाएंगे। सब वही है। आप मुझे जिस दिन जिस तरीके से देखने की कोशिश करोगे, जिस तरीके से अपने आप को देखने की कोशिश करोगे, वो उसी रूप में आ जाएगा। थैंक यू गुरुदेव। इसका मतलब एक अभी नहीं, मेरा एक क्वेश्चन और है हरि जी है। अच्छा, ओके। आप जल्दी से हटा रहे हैं। अच्छा सुधा जी, हाँ जी, माफी चाहता हूँ मैं, शिव जी को एक्चुअली ऑफिस का कुछ लॉगिन करना है, उनको 1 मिनट बात करना है, पहले उनको चांस देते हैं। हाँ शिव बिल्कुल बिल्कुल। शिव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी प्रणाम मानस जी। प्रणाम शिव जी। सॉरी सुधा जी, संध्या जी एंड मुक्ता जी। नहीं आप just दो मीटिंग्स थे जो I cannot avoid. I just want to request you all about the event that is coming up. उसके लिए मैं सबसे पहले मानस जी और हरि भाई को बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ। आज हरि भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, शेषनाग की बजाय सोफा यूज कर रहे हैं। But it looks similar to that only, na? Absolutely. That is what thought came to me first. And Hari bhai, can you rotate the camera whether Lakshmi is there at your legs or not? That's really great. So it was a great question by Deepika ji.
एंड मानस जी ने जिस तरह से हम सबको वो क्षण में, वो मोमेंट में ले गए हैं, about our own inner self to go in. This program that is coming up about grief recovery program, it says grief recovery as the main motto of the program, but this works for many situations. And in fact, we are all on spiritual journey, so this is the biggest benefit on our spiritual journey. Actually, we can use this tool to sharpen ourselves. For example, as Sudhaji also just said, there are different levels. We are all having different journeys. So in day-to-day life, we are all bounded by so many relationships. And I'm going to share in the program about different level, different consciousness level of ours in different stages. But using this tool, we can work on our issues related to relationships, related to how we go down into, how we pull down from time to time ourselves. And this is an amazing tool to look our journey, life journey from birth to now, and see where we are in this present moment, and what are major roadblocks and what are major losses in our life. And we can pick each one by one and work on it to have a completion. I am a past life regression therapist also, and I have seen many people stuck into the same wheel of journey. Like, in a relationship experience, if we do not complete in this lifetime, we keep on coming back again to experience the same energy. So this tool really helps to have that completion, completing the lessons, accepting who we are, and coming out of this circle also faster way. I mean, with our own effort. So this is a great opportunity on Saturday and Sunday from 8 p.m. to 11:30. We'll try, but it may extend a little bit. But it will be a very action-oriented program. You come with your open mind and be ready for taking those actions. And it's a great opportunity, guys. That's all I can say. I think, Manaji, this is a, I don't know when this program will happen again, but the tool is very amazing, and we have not experienced this. We have read many autobiographies of the people and all, so you will get a glimpse of your own journey right from birth to now, how you are, where we are right now. So thank you so much for this few minutes, Manaji. And again, I apologize, Sandhya ji, Sudha ji, and Mukta ji, for cutting the line. Thank you. Shivji, we apologize to people, those we don't know. We don't apologize to the people of our home. Thank you. आप apologize मत करिए. और आप आके कह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि शिवा के माफी मांग रहे हैं. नहीं, this is amazing. जो हर क्रिया बता रहे हैं मानस जी, जो एवरी जर्नी से हम जा रहे हैं, जैसे विद्या जी ने शेयर किया. मैं खुद एक मिनट में शेयर करना चाहता हूँ. जो गुप्त नवरात्रि था, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. आई नेवर हैड गुप्त नवरात्रि इवेंट सेलिब्रेटेड. एंड कितनी सिंप्लिसिटी से मानस जी ने बताया. एंड बाय फॉलोइंग दिस एवरी डेज रिचुअल, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि नारियल मैंने स्टार्ट किया फोड़ना. इनफैक्ट अभी भी मैं नारियल खा रहा हूँ, इतने कलेक्ट हो गए हैं एवरी डे. तो फर्स्ट डे मैंने नारियल फोड़ा, एंड नारियल जो है सेंटर में ऐसा जो खड़ा फुटता है, वैसे खड़ा फुटा नारियल. बचपन से ये बिलीव था कि जब भी पूजा में खड़ा फुटता है नारियल, तो इट्स समथिंग ऑस्पिशियस, समथिंग गुड. तो सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि मैंने फोड़ा, तो फिर खड़ा फूटा. देन आई हैड लाइक, माय गॉड, ये क्या हो रहा है? इज इट?
कोइंसिडेंट एंड क्या हो रहा है, यू नो, थैंक यू सो मच, दिल से निकला. बट थर्ड फोर्थ डे वाज अगेन नॉर्मल बैक. देन लास्ट डे जब मैं फोड़ने बैठा तो मैंने माँ से फिर बोला कि वाज दैट ए कोइंसिडेंस माँ, ये आपका ब्लेसिंग है प्लीज. तो ऐसे रिक्वेस्ट करके जब मैं फोड़ा, यू विल नॉट बिलीव, ऐसे खड़ा फूटा है जैसे किसी ने आरी से काटा हो. मतलब इट वाज सो एकदम सर्कुलर. नेवर इन माय लाइफ हैड इट. नहीं तो खड़ा भी फुटता है तो आधा जाके ऐसा टेढ़ा क्रॉस इधर इधर होता है. एंड इतने मेरे पूरा बॉडी में ऐसा ऐसा वो हो गया था कि व्हाट इज दिस, यू नो, हाउ graceful, how loving these great beings are with us, and they are always listening to us, they are always there with us. And ये जो simple experiences भी जो हम gain कर रहे हैं, जो मतलब experience हो रहा है journey में, it is truly blessing. इतने दिल से मानस जी सबको गाइड कर रहे हैं. ये जो अमाउंट ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ये नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डायरेक्ट. हम बड़े बड़े गुरुज का सीखते हैं, सुनते हैं स्पीचेस, उनके प्रवचन, बट इट्स ऑल नॉलेज दैट वी इट इज शेयर्ड. बट हियर प्योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट टू द पॉइंट ले जाते हैं. जैसे लास्ट टाइम नवरात्रि में आप सब लोग शायद अटेंड किए थे. आई वॉज सो अमेज्ड. मानस जी बोले जाओ अभी माता को लेके आओ नीचे डोर से. एंड राजन जी ने जो फोटो शेयर किया एंड ऑल दैट, आई मीन this is truly it's not available, I think, anywhere at this moment. We are so truly lucky. पता नहीं हमने क्या पुण्य का काम किया था ये जन्म और पिछले जन्म में कि we got connected. Again, this all goes back to our great Hari ji. Yes, that was the right answer. निद्रा में है कि उन्होंने जो वर्चुअली क्रिएट किया ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड we all got connected. Thank you Hari bhai. Thank you Hari bhai, thank you so much. शिव जी, थैंक यू. हमने पुण्य का काम नहीं किया, हमने बहुत सारे पुण्य किए थे, आप ये कहिए, तब हम यहाँ तक पहुंचे. एक पुण्य से नहीं हो सकते हैं. Absolutely Sudha ji, absolutely. Thank you Shiv ji. Thank you Shiv ji. We look forward to the English version of your session this time. Absolutely. And it is good that you are doing it simultaneously, Saturday and Sunday, so that people don't go crazy within the week. Absolutely. It was a great suggestion actually, and it may take little time on the weekend. You will be little busier, but these 2 days of work would be very transforming, and you will get that tool to work on yourself on and off, you know, whenever you need it. Yeah. So thank you Shiv ji. Thank you for helping the family, and thank you for taking out your time and doing those sessions for this family. So we are also thankful to you. Oh, it's my pleasure, Manoj. It's my pleasure, great pleasure to be in this family and contribute whatever I can. Probably in future we can have a past life regression session also, one of the session. But this is a great opportunity. Thank you all. But now the problem here is, Shivji, now everybody is not regretting their past. They are saying, हम कुछ अच्छा पुण्य किए थे जो यहाँ है. Very true, Manoj. But we'll see. Like there are variety of people in this. So whoever is needing that, we will surely see. Today you speak here, or you speak like that, or you speak like somebody else tomorrow. It's all about like creating that cohesence. Absolutely. I mean, that also it's a spiritual experience, Manaji. I think past life regression, because we learn so much about past Janma, you know, how our life has been, evolution and all that. When someone experiences and then experiences the whole life cycle and the moment of death and then coming out, and then, you know, how this thing, it's a very spiritual experience as well. Thank you. So sure. Thank you so all. We will be sitting with you. Thank you everyone. See you on Saturday. Thank you Shivji. Yeah, Sudhaji, you can continue. सर दूसरा क्वेश्चन मेरा वही है जो मैंने आपसे पूछा था. अच्छा, तो सुधा जी का एक बहुत ही
typical question, a very typical question today. He said like, आप चाहे तो जवाब दीजिए, नहीं चाहे you said like the lady should take a pallu while doing puja. Then why none of the devis put a pallu on their head? देखो प्रीति जी को भी बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, बोलते हाँ ये सही सवाल है, हमारे सर पे पल्लू, कोई देवी के ऊपर नहीं, वाई? नहीं सर, क्वेश्चन ये नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन ये था ना, नहीं क्वेश्चन ये नहीं था सर। क्वेश्चन ये था, फिर से पूछ लीजिए। हमारे जो भी आप हमारी जो पूरा आप देख लीजिए, कोई भी धर्म वाली वो है, कोई भी किसी की फोटो देख लीजिए, शिव पार्वती हो, सीताराम हो, किसी में भी ये नहीं दिखाया गया है कि वो उनके साथ सिंहासन पे भी बैठी हुई तो उनके सिर पे पल्लू, या किसी भी टाइम, मतलब हमारे कल्चर में ऐसा नहीं था कि सिर पे पल्लू लिया जाता था। मेरा मतलब ये था, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा था कि जब मुगल आए तब ये सिर पे पल्लू लेना शुरू हुआ, इसलिए मैं इसको कंफ्यूजन को वो करना चाहती थी। क्या था ये? वेरी टिपिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट विद दिस टिपिकल क्वेश्चन। एक तरीके से देखते हैं इसे। हाउ डू यू नो व्हाट यू सी इन द इमेज इज द राइट वन? क्योंकि जो हम देखते हैं, हम उसी से तो सोचेंगे कि ऐसा था। Who created that picture? Naturally, human being created picture. Do you think Devi will be wearing sari in this fold and putting ornaments? Have you seen a Devi yet? वो हम मान के चलते हैं सर, ऐसा होगा। So देखो, so that's where it lies. It's lying there. Now the mind is questioning that everybody is putting a pallu, but the Devis are not putting a pallu. And then somebody has given a idea that ये रिवाज नहीं था पहले, but after a certain historical time, it came into existence. Right? वो लोक लाज हो या पर्दा करना हो, whichever thing we think of. After that, it began. I cannot deny that also what you are saying. It must have been that way, or else why all those Devis have not been? However, at the same time, you see they also wear a crown. Now, can you take a pallu over the crown? नहीं, अभी भी जैसे नॉर्थ में पल्लू लिया जाता है, लेकिन साउथ में अभी भी पल्लू लेना अच्छा नहीं मानते सिर पे। वो तो मान्यता जो विडो होती है, हाँ, वो तो मान्यता है। आप पूर्णिमा से काउंट करना शुरू करते हो, अमावस्या से करते हैं, बताओ कौन सही कौन गलत? वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। तो जो पल्लू लेता है वो अपने जगह सही है, जो नहीं लेता वो अपने जगह सही है। दोनों सही है। Because it is not in the realm of spirituality, it is the realm of logic. And the logical mind is questioning why. That's why I asked you a logical question. How do you know? Have you seen it? Or you are just watching an image and just talking about that? सर हम तो इमेज ही देखिए। हाँ, because you see that image, they appear in front of you in that image. And if you don't have an image, they will appear without any image. That's the greatness of you and the creator. That whichever form you want, you create them in that form and they appear in that form. अगर आपको कोई भी देवी को पल्लू के साथ देखना है, मैं कहता हूं आप बोलो, और अगर वो आपके सामने पल्लू लेके नहीं आए तब मुझे पूछना. And it might just happen to you tonight. Why delay? नहीं, मुझे तो जैसे भी वो आ जाए वैसे ही देखना है। कोई ये नहीं कि पल्लू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो बताओ ये देखना सवाल है का बस। कुछ है? Is there anything to this question? Can you see it's a logical question, and when you try to tackle it logically, it says, "Hey, leave it." Exactly. It doesn't have any meaning to that. So, अगर आपको अच्छा लगता है पल्लू लेना, लगाओ, इज गुड, बट सर्टन प्रोसेसेस के लिए पल्लू लेना पड़ता है, इसीलिए आई से दैट यू शुड पुट इट. नहीं सर, नॉर्थ में तो हर पूजा में पल्लू लेना कंपलसरी बताया ही गया है। नहीं, कई सारे ऐसे पूजा है जिसमें पल्लू नहीं ले सकते आप.
वो लेना हो ही नहीं सक- है उस पूजा में। हो सकता है जैसे हमने अभी तक जो अपने यहाँ पूजा देखी है ना, सब में पल्लू लेना ये जरूरी हाथ है। वाले पूजा में कभी पल्लू नहीं लगता। ये हाथ के हर एक पूजा में पल्लू लगता है। जैसे आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग बाएं कंधे पे जनेऊ धारण करते हैं, हम्म, लेकिन जब पिंडदान करते हैं तो असभ्य बनते हैं, मतलब ये हाँ, वाला दाहिने तरफ ले लेते हैं। दाहिने कंध रख देते हैं। तो क्या है, वो प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वो वाम मार्ग प्रक्रिया है, वो प्रेत योनि से प्रक्रिया है, इसीलिए असभ्य बन के करना पड़ता है। इट हैज टू कम टू द राइट साइड। बाकी सारे पूजा के लिए सभ्य बन के करते हैं, यस ना। सो ऐसे ही है, ऐसे कई सारे पूजा है जिसमें आपको पल्लू लेना मना है, बट जब वैसा पूजा आपसे कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने अभी तक ऐसी पूजा कोई नहीं देखी जिसमें पल्लू लेना मना हो। अगर देखना है ना तो दुनिया बहुत बड़ी है। देखिए गुरुदेव, मैं तो हाथ खड़े करके खड़ी हूँ, जो आप चाहे वो दिखा दो, जो नहीं चाहे वो नहीं, जैसी बात, बस हम यहीं तक हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुधा जी। थैंक यू हरी जी। संध्या गारू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Namaste, Guruji. नमस्ते संध्या जी। Sir, there are so many stars in the sky. Oh my God. Okay. What is there? Are What is- any life beings or what are they? But we are telling, according to Vedas, there are 14 lokas. Okay. So many stars, and whether there is life beyond this or not, then 40 lokas are there, then why so many stars? If I say yes, will you agree? And if I say no, will you agree? See, I'm able to see, but I don't have the knowledge or anything about it. Correct. So a question as a kid is good. So let me answer that then. Yes, there are. As simple as that. There are certain people, Hari, I was just talking to someone and somebody said like, oh, in the dark night, how beautiful it looks, the star shines. And the other fellow says, it looks like pimple on the girl's face. You see, who is right here? Jaisi nazar. Somebody is seeing beauty in it and somebody is seeing ugliness. So is there anything wrong with the stars there? No. It's about your way of looking at it. So Sandhya ji, yes, those are a replication that there are creation also beyond you. Even while on this planet Earth, you look at your hand, can you see all the organisms on your hand right now? No, you cannot see. Similarly, there are life forms which cannot be seen. When we talk about 14 lokas, there are specific mention of particular realms that can be achieved through certain processes. That's why 14 lokas have been distinguished. But the day you get beyond those 14 lokas, you will find more than that. Just like one earth, many continents, many countries, many states, districts, and talukas.
Similarly, in the cosmic creation, it is so huge that the human mind even cannot conceive it. उसे समझ भी नहीं पाएगा. But if it is given in the full capacity, it will break. That's why it is given in a systematic way. Can you, Sandhya ji, tell me how much part of the universe you know and how much part you don't know? Unmute yourself, please. Anyone, everyone in the room, go to the same question. How much part of the world you know or the creation you know and how much part you don't know? Many of you might say, I know 0.005% of the creation and the rest I don't know, right? No, that's the wrong answer. That's the wrong answer. Because there is a certain part that you know and there is a certain part that you don't know, but there is a major part that you don't know, even that you don't know that. क्या आपको पता है कि क्या आपको पता है? ये एक पार्ट है. आपको ये पता है कि मुझे ये नहीं पता है, लेकिन ऐसा बहुत है जो आपको पता ही नहीं है कि ये मुझे पता नहीं है. Just like I have seen Charminar, I have not seen Eiffel Tower. तो मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ नहीं देखा. But do I know all the things in the world? And that's how I say it. There are certain things you know, there are certain things you don't know, but there are more than that that you don't know, that you don't know. So similarly, all that stars जो भूमंडल देखते हो आप, क्योंकि when I speak about the different kind of lokas, I also spoke sometime about the Hiranyagarbha, Bhugarbha, Matrugarbha. You're getting that? Hiranyagarbha is the space from where all the entire creation is happening. Bhugarbha is like the planet Earth on which life is happening. And then in the life form of the Bhugarbha is the Matrugarbha through which we are taking birth. But can you say it is just one womb? Because every mother is giving a birth. Can you see? It's the same way. There are many universes. But if I start speaking about that, even you will not able to decipher that. आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं उसके बारे में बात भी करूं. Especially, I don't know, like if anybody watches something, because Hari Bhai watches these things. Hari Bhai, in Gaia, there is a channel called as Gaia right now, no? Yes, Maharaj. In that, even when you open YouTube, might be you will find that certain advertisements come up, right? In that, there is a particular advertisement coming up, a fellow from the Western world, he's speaking that there are beings, they are like reptilian beings, means reptiles ke jaise hai. And they come and they are of higher intelligence and all those things he's speaking a lot about, and the world has gone crazy after his talks. But our yogis have been speaking about that, I don't know since how long. Especially listen to this. I don't know if you can digest this or not. Two kind of beings are there whom you can actually meet from another realm. एक है सर्प योनि. They are like snakes. Body of a human, head of a snake. Can you imagine? Now, go on imagining. Because whatever you imagine will not be like the way they are. If any one of you have read about Mahavatar Babaji, anybody read? If you read about Mahavatar Babaji, in his, whoever has talked about Mahavatar Babaji, they must have written
about the Nagalokas also. So these kind of beings are certain beings that you can meet physically. मिल सकते हो आप. It is available. Another realm that you can meet is the immortals in the physical realm. But beyond that, there are so many that you can actually meet, but you will never understand it. Hariva, you remember I speak about somebody whenever I am outside and you are with me, or any one of you are with me. Have you noticed a typical thing that I always do? I don't know if you have noticed that. If I am at a space, in an open space, I always do a certain thing. I keep on looking upwards, right? Yes, yes. And I keep on talking to someone. And I suddenly something I do with my hand, I do something. Why do I do that? Especially the people who have spent time with me, they might have noticed if I am standing in an open sky, I will start doing certain thing. As if I'm speaking to someone. That's the reason behind it. There's a very specific reason. But even if I say, you will not understand that, because that is not in your experience. So the only thing that I can give you is not tell you, but make you experience that. Sandhya ji, can you imagine a person, a minimum height of 42 feet? Not like the Khairatabad Ganesh. A human kind of form, a size of 42. And I don't know, like much more than that. Hand, the palm is big enough that you can sleep on it. It's available. People are talking about Yetis, 14 feet high, 16 feet high. And all that people, those who believe in Rama and Ravan, even the geographical foundations that people are coming up with now, they say Ram was the shortest guy and he was 14 feet high. Ram was the shortest. Then how much would be Ravan then? So, Sandhya ji, absolutely there are so many unclaimed terrains, unknown spaces. We just think based on our height, weight, and reach that we are big enough. Just like a million bacteria on the tip of a needle. For them, how big is the world? The needle. But for you, just a needle. No, for them, it is the world. Similarly, when you say earth, just a needle. Just see the size of the cosmos. It's not even a speck of dust. So why can't it be possible that on a speck, we so many people sitting here and realizing there cannot be anything else beyond that? Even science cannot deny it. And science cannot deny it. That's why it is searching for it. Yes or no? Because they also know that there is something beyond this. So yes, relevant of stars is there. Relevance of locus is there. And of course, there are people, those who have met them. So for them, it is not a story. Okay? So Haribhai, please unmute her once. Yeah, Sadhya Garu, you can.
Sir, we don't want any knowledge about. We have to practice. So, see, having knowledge is nothing bad. But at times, as I said, no, many people, Sandhya ji, in the search of all those things, lose out on what they want to achieve. So, Sir, instead under this, only please. Shiva is the root origin for all. Somebody says Rudra is another, Shiva is another different. Some culture says like that. Why only some other people? I also say that. But some from the childhood we are thinking both are same. What is wrong in that? Shiva is root structure and Rudra is only linga like Okay. that. Or, No, that is nothing also as not such. Now correct. just tell me one thing, Sandhya ji. You must be a daughter to someone. You must be a mother to someone. You must be a wife to someone. You must be a sister to someone, a niece to someone, a nephew, like a cousin to someone. Yes or no? Yes, sir. Are all those relationships real or not for you? Real, sir. Real. But are you many or one? One. So Shiva and Rudra? One. Over. You are taking a certain role for a certain relationship. To do a certain work, he has taken a certain avatar or rupa. But does it make him different? Absolutely not. Is the all one appearing many? And when I look at you, why only Rudra? Why not Sandhya? Why not Mukta? Why not Abha? Why not Mamta? Why not Suma? I also say you are also the same. Appearing different. Okay, Sandhya ji. So, if you want to discover more and more of him, discover more and more of yourself, and you will find it within. It is already always there, waiting to answer. It's just waiting for you. So go search. Okay, Sandhya ji. Thank you so much. So yes, so Hari bhai. Yeah, Abaji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आभा जी। गुरुजी एक क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल पूछ लीजिए। प्लीज एक्सप्लेन हिंदी में करिएगा आप। एक Okay. शब्द है हिंदी में स्वार्थ। अच्छा, तो स्वार्थ शब्द नेगेटिव है या पॉजिटिव? क्या सुंदर शब्द है। लेकिन स्वार्थ अपने लिए है या दूसरों के लिए? स्वार्थ अपने लिए है। अच्छा, स्वार्थ अपने लिए। बिना स्वार्थ का आप जी सकते हो? तो स्वार्थ तो गुरुजी स्वार्थ का मतलब ही है स्व अर्थ। हमारे लिए जो है, मेरे लिए जो अर्थ बनता है वही स्वार्थ है। वही मैं बोल रहा हूँ। क्या आप बिना स्वार्थ के जी सकते हो? जी सकते। जी सकते हो क्या? हाँ या ना? ना, बिल्कुल नहीं जी सकते। क्योंकि अगर आप स्वार्थी नहीं हो तो सांस कैसे लोगे? सांस कैसे लेंगे? You cannot even take breath ना। So you have to be, स्वार्थ तो होना जरूरी है, लेकिन कितना? कितना? The next question is how much? उतना जितना हजम हो। खाना अच्छा है या बुरा है? खाना तो खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा? ज्यादा खा लो तो फिर बुरा है। हाँ, वैसे ही है स्वार्थ। अच्छा गुरुजी, एक बात और बताइए कि इसको फिर नेगेटिव
के लिए क्यों यूज किया जाता है? अरे बड़े स्वार्थी हो, बहुत गलत तरीके से बोला जाता है, अरे तुम बड़े स्वार्थी हो। ये वही लोग बोलते हैं जो उसमें डूबे हुए हैं। आपने कभी देखा है कि किसी अच्छे व्यक्ति को ये सब बोलते हुए तुम बड़े स्वार्थी हो, ये हो वो हो? नहीं ना। ये वही बोल सकते हैं जो उसमें डूबे हुए हैं। अच्छा गुरुजी, एक चीज है ना, अब जैसे मुझे अहम ब्रह्मास्मि मैं हूँ, मुझे पता है पक्का कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ओके, चलो डन। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और एकला चले की राह पे चलना पड़ेगा। अच्छा, ओके। और फिर जब बहुत सारे कामों को मैं छोड़ती हूँ, तो क्या वो मैं कर्तव्य से विमुख नहीं होती हूँ? वाओ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आभा जी, यही मन के द्वंद के बारे में हम बात कर रहे थे। ये यहाँ देखिए, हाँ, हाँ। एक मिनट अभी सुन लीजिए, ये आपको क्लियर कर देगा ये बात। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर मैं ये सारे चीजों को छोड़ देती हूँ तो मैं अपने कर्तव्य से विमुक्त होती हूँ क्या? यही है ना सवाल? So let me repeat the same thing in English also so that everybody gets it. Okay. So Abhaji is saying like, how much should you be selfish? And how much is acceptable and how much is not? So I said, without selfish you cannot live because you have to take a breath. Without taking breath, how can you be alive? So utna स्वार्थ तो होना ही चाहिए. Now the question she is asking is, if I am realizing myself to be Aham Brahmasmi, then certain things I have to leave. So is it not that I am going away from my kartavya, my doing? मेरे कर्म से मैं कहीं निकल तो नहीं जा रही। अब आभाजी बताओ जी, क्या ब्रह्म कर्तव्य में बंधा हुआ है या कर्तव्य से मुक्त है? ब्रह्म तो कर्तव्य से मुक्त है। तो फिर कर्ता कौन है? तो कर्ता भी ब्रह्म है। तो बताओ। जब वो कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, वो तो सब कुछ वही है। कैन यू सी? तो अगर आप अहम ब्रह्मास्मि हो तो आप भी सब वही होना चाहिए। लेकिन गुरुजी, जो अभी हम कंडीशन को फेस कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी एक फैमिली सिचुएशन है, मैं आपको बताती हूँ। ओके। अगर मेरा टाइम है मेडिटेशन का, उस वक्त में मेरे बच्चे का स्कूल जाने का टाइम। हाँ, अब देखो, हाँ, इस टाइम पे आभाजी चूज, डोंट फाइट। हम फाइट में चले जाते हैं। मैं कहती हूं कि मेरा बच्चा स्कूल जाना है तो मुझे उसके को तैयार करना है, देन आई से अरे मेडिटेशन नहीं किया। लेकिन अगर मेडिटेशन करने बैठती हूं तो मैं कहती हूं अरे मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? आपने पक्ष नहीं लिया किसी का। आप कभी इस तरफ खड़े हो जाते हो, कभी उस तरफ। मैं कहता हूं ये दोनों से निकल के बाहर खड़े रह जाओ। अगर स्कूल का बच्चे का टाइम है, लेट मी कंफर्म, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं कर देती हूं। और वैसे भी इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में किया जाना चाहिए। क्यों जानते हो? क्योंकि वहां वो समय पे बाकी सब सोए रहते हैं। तो आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई। हाँ, नहीं गुरुजी, ये तो एज ए एग्जाम्पल था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही थी। बट सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे कोई भी इंटरप्शन नहीं है काम करने में। बहुत अच्छा आबाजी, उस समय एक ही चीज करना है आपको। ओनली वन थिंग यू हैव टू डू इन दैट मोमेंट। इंटरप्शन नहीं है, बट मेरी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी है कि जब मैं कंप्लीट अपना वर्क फिनिश करके बैठती हूँ तो मैं एकदम सेटिस्फाइड होती हूँ अंदर से कि मैं आराम से कर सकती हूँ मेडिटेशन। लेकिन शायद मैं अपने फैमिली मेंबर से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हूँ कि अगर वो, हालांकि सब मुझे कोऑपरेट करते हैं ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन अगर मैं उस काम के लिए लेट होती हूँ कि किसी फैमिली में किसी बंदे को खाना नहीं दे पाया टाइम पे, तो मैं यदि पूजा का, मेरा जाप का टाइम चल रहा है, मेरा पूजा का टाइम चल रहा है, तो मेरा पूजा से वहां हटता है कंसंट्रेशन और लगता है नहीं, पहले मुझे खाना देना चाहिए, इसको मैं बिल्कुल रिलैक्स होके कर सकती हूँ। तो उस वक्त को मैं पूरा अपना 100% नहीं दे पाती उसमें। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा जल्दी उठा करिए। नहीं, सुबह का तो चल जाएगा, बट दिन में बहुत सारा टाइम होता है गुरुजी, बहुत सारी चीजें होती हैं दिन में। तो एक ही बात है, देखिए, द्वंद में मत जाइए।
यही द्वंद्व है जो हमको जीवन भर खींचता रहता है, या तो अरे ये करना है या वो करना है। ओके, लेकिन नहीं, मेरी अपनी स्थिति से मैं आपको रूबरू करा रही हूँ। नहीं, फैमिली तो आई सपोर्टिव है। अंडरस्टैंड दैट आबाजी, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, उससे मुक्त कैसे हूँ वो बताना चाहता हूँ। तो उससे मुक्त होने का एक ही कारण है और एक ही तरीका है। तरीका क्या है? ये जो समय है ये उसके खाने का या उसके स्कूल जाने का समय है। तो मैं अपना पूजा उस समय में रखूंगी क्यों? क्योंकि ना वो हो ना ये हो। कैन यू सी, वी आर क्रिएटिंग बोथ द सिचुएशंस। ठीक है, तो क्यों करेंगे हम ऐसा? हम नहीं करेंगे। हमको पता है कि स्कूल का टाइम, खाने का टाइम, जाने का टाइम, आने का टाइम फिक्स है। तो हम उस समय में अपना ध्यान का समय क्यों बना के रखते हैं जहां हम फंस जाएं? ये तो सही है। नहीं गुरुजी, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे मैं बता रही हूँ। शाम के वक्त मान लीजिए आरती का टाइम है, आरती के बाद मेरे संध्या का टाइम होता है जाप का। उस जाप के टाइम में मुझे 25 मिनट कम से कम लगता है। आरती हुई 15 मिनट, आरती के बाद 20-25 मिनट मेरा जाप का टाइम चलता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जाप के वक्त में मुझे लगता है तो 9 बज रहा है, अगर 9 बज गया, इनकेस कभी लेट होती हूँ, कोई आ ही गया, कोई गेस्ट आ गए, तो वो फैमिली में थोड़ा अप डाउन होता है, चलता है। ओके, तो आभा जी एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं जस्ट जी, कोई आपने कहा कोई आया इधर, किसी ने बेल बजाया है, सो 1 मिनट, आई विल बी बैक इन। ठीक है। शिव शंकर करुणाकर, हे उमापति शंकर करुणाकर, सर्वेश्वर। सो हरि भाई, आई एम बैक। तो आभा जी बताइए कैसा लगा अगर मैंने अपने कैमरा बीच में बंद करके मैं गया और आया? आई एम स्टिल वेटिंग। मैं तो उसी चीज में थी कि मैं मेरा कंसंट्रेशन यही था बस, बाकी और कुछ नहीं था। सो कैन यू सी कि इफ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, मुझे कोई काम नहीं था, मैंने जानबूझ के ये कैमरा को ऑफ किया अभी। आई वांटेड यू टू रियलाइज समथिंग। What was the realization here? The realization is you have a choice. I have a choice to sit here and continue answering, or I have a choice to close it down and go. But I decide that. और जो भी मैं डिसाइड करता हूं उसके बाद I don't regret that part. But हम एक डिसीजन लेते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं। वो रिग्रेट के वजह से वो समय तो गया, ये समय भी जा रहा है, चला जाएगा। इसीलिए एक डिसीजन ले लो, ये टाइम पे मुझे ये करना है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट। अगर इतना आप डिसाइड कर लिए, यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट क्वेश्चन इटसेल्फ। लेकिन गुरुजी, ब्रह्माष्टमी के लिए तो मुझे शायद स्वार्थी बनना पड़ेगा ना, काफी सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। आपको सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको सबको अपनाना पड़ेगा। अपनाना तो अलग चीज है, मैंने सबको अपना लिया है, बट छोड़ने से मेरा मतलब है कि तो फिर छूटा क्या? अगर सबको आपने अपना लिया है तो छूटेगा क्या? ये
आभा जी, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक योगी थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो घर छोड़ के चले गए थे, योगी बन गए, और जब भी कोई भक्त उनके घर में बुलाता तो उनके घर जाते। लेकिन जब भी ये योगी के जो घर वाले हैं, उनकी माँ जो है, उनको जब भी बुलाते तो ये नहीं जाते। तो किसी ने पूछा, कोई ज्ञानी आया था वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि अरे आप हर जगह जाते हो, उस घर में नहीं जाते? नहीं नहीं, उस घर में कैसे जाऊं, वो तो मेरा घर था और वो घर मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, जब छोड़ ही दिया है तो आपका घर कहाँ रहा? आप तो कहीं पे भी जा सकते हो। आपने कहा कि मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसी घर से बंधे हुए हो। अगर आप मुक्त हो तो आप हर चीज से मुक्त हो, कोई बंधन नहीं है। और जब आप अहम ब्रह्मास्मि कहते हो, ये छूट जाएंगी कुछ चीजें, जिस चीजों का कोई मायने नहीं है वो सारी चीजें छूट जाएंगी, लेकिन आप भर भी जाओगे। तब आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचोगे कि आपका जो मेडिटेशन है वो आज के बाद आपके मुक्ति का कारण नहीं बनेगा, आपका मेडिटेशन दूसरों के भी मुक्ति का कारण बनेगा। तो बताओ, आप स्वार्थी हुए कि नहीं? मैं तो कहता हूं आप स्वार्थी बनो, इतने स्वार्थी बनो कि एक घर नहीं, पूरे संसार में जितने घर है सब के बारे में आप सोचो, इतने स्वार्थी बनो। गुरु जी, ऐसे 10-15 साल पहले किसी से थोड़ी देर के लिए वार्तालाप हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि घर में रहते हुए घर को छोड़ देना ही सार्थकता है। घर में को रहते आभा जी, मेरे हिसाब से मुझे एक ही चीज समझ में आता है, स्थिति ऐसी ना हो कि आपको छोड़ना पड़े, स्थिति ऐसी हो कि सब कुछ छूट जाए। यही वो वैराग्य है। हाँ, बात का मतलब यही है ना, घर में रहते हुए घर को छोड़ देना। नहीं, तो बात एक नहीं है। छोड़ देना मतलब, अच्छा मुझे छोड़ना पड़ेगा, आप सोच में भी रहोगे। तो छूट जाती है वो सब चीजें, उसका वहां पे उनका अगर छूट गया तो छूट रहा है, छूट गया बस, तो मुक्त हो रहे हो ना। फिर इसी यही तो चाहिए, फिर बंधे हुए हो किसमें? वो ना देखो, यहाँ पे भी आपने डिसीजन नहीं लिया है कि छोड़ना है या पकड़ना है। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं मुक्त हो रहा हूँ। बस, तो फिर डाउट ही नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए इसमें। लेकिन डाउट तो बस गुरु जी इतना सा है, वो तो आपको क्लियर करना ही है। डाउट मेरा क्या है, मैं बता देती हूँ कि जो मेरी मानसिक स्थिति है वो शायद इतनी अटैच्ड है या वीक है, मैं नहीं कह सकती क्या है वो सिचुएशन मेरी क्या है। बट जब सब सपोर्ट भी करते हैं मुझे, तब भी एक कहीं से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि शायद इनको भूख लगी होगी या इनको ऐसा चाहिए होगा, या एक काम करिए ना, बैठने से पहले खाना रख के आई। ये तो है, ये सिचुएशन है, खाना ही नहीं। कैन यू सी, आपका माइंड एक एक्सक्यूज को लेके आपको समझने नहीं दे रहा है। क्या ये इतनी बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। नहीं, जब मुझे सब कहते हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, क्या ये भी स्वार्थ है? मैंने छोड़ दिया, कर लो अपना, खा लो, एक तैयार बात बताओ आभा जी, क्या खाली माला संध्या के बाद ही किया जा सकता है? नहीं, माला तो कभी भी किया जा सकता तो है। करो। वही टाइम पे क्यों कर रहे हो, और वही टाइम पे बैठ के ये सारे चीजें क्यों सोच रहे हो आप? हाँ, नहीं ये मतलब रेगुलर कंडीशन नहीं है हमारी, पर डे नहीं है, लेकिन कभी जब है तब भी क्यों है। हाँ, तब उसको सवाल पूछना, क्यों भाई, आज क्या हुआ तुझे, आज आके ये सब क्यों पूछ हाँ, रहा है? जब है तब भी क्यों है। हाँ, तब भी पूछना। आप मुझे नहीं पूछना, आप अपने आप को पूछना कि अच्छा भाई, रोज तो यही होता था, आज क्या स्पेशल है इसमें? क्योंकि सिर्फ अपने लिए ही तो सोचना है। शक्ति आभा जी, शक्ति आपने उसको दे दिया द्वंद करने के लिए। हट जाओ वहां से। एक काम करो, देखो कभी कभी मस्तिष्क जो है ना उसमें चलता है, इसीलिए एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, उन दोनों में खींचतान चलती रहती है। लेकिन जब भी ये लड़ने आते हैं ना, तो मैं एक ही काम करता हूँ, मैं वहां से हट जाता हूँ। मैं बोला जाओ लड़ो, और एक मर गया तो अच्छी बात है, गो फाइट। लड़ पाएंगे? नॉट पॉसिबल। वो ये क्वेश्चन मेरा
आया था कि वो मन की स्थिति चंद्रमा के वजह से चलती है क्या? क्या मेरे साथ भी ऐसा है कि अमावस और पूर्णमासी का सिस्टम है क्या? बेचारा चंद्रमा कहाँ बैठा है, उसके ऊपर पता कितने नहीं है लांछन उसको। लगा रहे हैं हम। क्या किया था कि नहीं गुरुजी, ये सही है। इस बार फॉल्ट मेरा है। मैं समझ गई आपकी बात को कि मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर पे अडिग रहना है, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पे अडिग रहना है, बस सिर्फ यही इसका एक सॉल्यूशन है। देखो, हमने कुछ बताया नहीं और आप समझ गए, कितनी अच्छी बात है। नहीं, आपने जितना कहा मुझे उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया कि आप मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह यही होता है ना आभा जी, आपके साथ बोल के नहीं, ये हर एक के साथ यही है। वो कोई ना कोई एक बहाना लेके आ जाता है आपके सामने और हम वो बहाने को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं। डोंट इवन, अगर किसी चीज को छोड़ना है ना, संसार मत छोड़ो, ये बहानों को छोड़ दो, रहे। बहानों को छोड़ो। फिर देखना मुक्त हो जाओगे। हम्म। You don't have to leave the world, you have to leave those excuses and leave the excuses and you will find your freedom. मैं इसलिए ये नहीं हूं कि because, very powerful word, because of this, because of that, वो because को छोड़ो। अच्छा गुरुजी, शांति पाठ आज हो गया घर में, तो Okay. आज से पूरा पूजा शुरू कर दी मैंने, क्योंकि अब शिवरात्रि में भी कम टाइम बचा है ना, तो शायद शिवरात्रि तक एक पुरुष चरण पूरा हो जाए मेरा। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन ओके आभा जी। हाँ, लेकिन वो चाहिए ना, थोड़ा आपकी ब्लेसिंग, तभी तो होगा पूरा। चलो, वो भी भेज देते आप। चलिए, ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू अभा जी। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू हरि भाई। थैंक यू। ममता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। You see, जयराज जी ने कहा था ना, द मॉन्क इन द मार्केट, ये देखो, Turn right onto 1 Route 40 east towards Airport Miracle now. Aham Brahmasmi. देखे, यही बोला था राजन जी, मॉन्क इन द मार्केट। Gurudev, thank you so much. I don't know about the teachings, the preachings, the knowledge, but it is all experience. I have been observing Gupta Navratris for long, but whatever you teach, whatever you share with us, it is very, very, very different. Very different, very experiential. It's something that we experience, and आप बहुत कुछ समझा देते हो और इतनी सरलता के साथ कि we understand now why we are doing this. Earlier we were just doing it. Now there's so much of meaning, and every time we do, we think about what you said. So, there's so much to whatever we do in today's context. Thank you so much for everything. So, your wedding anniversary? Yes, it's a wedding anniversary. तो It's बच्चों, time सब for आशीर्वाद blessings. भेजो, प्लीज It's सेंड योर time. ब्लेसिंग्स। ये देखो, राज नाम तो सुना ही होगा। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। Pranam, Pranam Raji. So congratulations to both of you, and may you keep shining, because you both are shining brighter today. So with every passing day, you shine much, much brighter, that the next time we see you, we might be needing goggles. It's all your blessings, Gurudev. It's all your blessings. I don't know, it is blessings or blushings that is happening to you. Thank you so much. Thank you so much. आप दोनों को देख के बाकी कुछ लोग यहाँ शर्मा जा रहे हैं। Okay. So sorry, we are on the road, so really in the highway. Thank you so much for everything, and it's always I should tell you all the jobs that I'm doing. I mean, I can relate to each one. I don't leave home till I don't complete it in the morning. So it's amazing. It's amazing. So thank you. Thank you so much. Mamta ji, and blessings and good wishes and whatever.
from the entire family. Everybody is starting to sending messages to you. So please accept. Thank you. Thank you. Dhanyavad to everyone. And thank you so much, Manasji. Thank you so much, Haribhai. Thank you to the complete family. So you people have a great time. The only thing is we were waiting, like you'll be telling us the venue also, but nobody told us. We are just moved from Toronto to Montreal for a vacation weekend. So that's what we are asking, place, because we are no more in the physical realm. We can travel anywhere. Okay. So we are taking you guys also along with us. So when we are traveling, you are with us. The complete Sure. family is traveling with us. That's what we say. Chalo, thank you for taking us there also. Thank And you so much. may you Gurudev. both, may your family be blessed. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Truly grateful. Thank you so much. Thank you. Mamta ji, Raj ji, happy anniversary. Thank you, Haribhai. Thank you, so Haribhai. much. Wow. Thank you so much. Good. Yeah, Raj ji, please, and Rajesh ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुजी. हेलो. हाँ राजेश जी बोलिए. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. गुरुजी एक ये जापा जाप जो चल रहा था गुरुजी, तो शिव जी का कौन सा है गुरुजी? हरि भाई, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? थोड़ा साउंड कम हुआ. राजेश जी एक बार रिपीट करिए, मुझे भी सुनाई नहीं दिया. एक मिनट. ओके. जापा जाप जो करना है ना गुरुजी, ओके. तो कौन से जाप करना है उनको पूछता था. जाप जाप कौन सा जाप को करना है राजेश जी? तो जो जाप अपने आप आपके अंदर बजने लगे वो अजाप अजाप बन जाता है. कभी नारायण आ रहा, कभी शिव जी आ रहा. तो करो. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? शिव भी बैठ के नारायण नारायण करते रहते हैं. मैं भी सुबह उठता हूँ तो नारायण नारायण करता रहता हूँ. तो इमोन मुझे एक दिन पूछा, आप नारायण नारायण क्यों बोलते हैं, आप शिव शिव क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो शिव है वो नारायण नारायण बोलता है, जो नारायण वो शिव शिव बोलता है. कोई कंफ्यूजन और बीच बीच में नारायण का आता था गुरुजी, फिर बीच में शिव जी का आ रहा था. दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा. कोई बात नहीं राजेश जी. एनीथिंग, एनी नेम दैट बिकम्स आपके अंदर अपने आप जिसकी माला चलने लगे वो अजाप अजाप होना चाहिए. देखो कई सारे लोगों के अंदर संसार का जाप चलता है, वो अजाप अजाप है उनके लिए. थोड़े पैसे और थोड़ी गाड़ी और थोड़ी ये और थोड़ा वो और थोड़ा ये, वो अजाप अजाप है उनके लिए. क्या है? वो संसार का अजाप अजाप है. आपके अंदर अगर राम राम चल रहा है तो राम राम चलने दो, वो आपके लिए अजाप अजाप है. आपके अंदर नारायण नारायण चल रहा है, वो चलने दो, वो आपके लिए अजाप अजाप है. अजाप अजाप का कोई डेफिनेशन नहीं है राजेश जी. मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि मंत्र दिया नहीं जाएगा, आपके अंदर से जो मंत्र निकले वो अजाप अजाप बन गया, तो और क्या चाहिए? इफ दैट is appearing from within and that's something that is going on repeatedly, that's your ajap ajap. ये ओम नमः शिवाय जो जापा कंटिन्यू कर सकते गुरुजी ऐसे? अब देखो उसके बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन राजेश जी वहां पे एक द्वंद्व आएगा. देयर विल बी अ फाइट एट टाइम्स. यू विल थिंक अरे मैं नारायण नारायण बहुत देर से बोल रहा हूँ, शिव शिव कब बोलूं? सही गुरुजी. ये कंपटीशन आता है. And literally, Rajesh ji, I will tell you, there are people, I don't know how many of you relate with that, but some of you will relate with it. आपने देखा होगा अपने घर में जब पूजा करते हो ना, you do a worship in your house. If you take a diya or a agarbatti and you first rotate it in front of somebody else, any of the goddess or Shiva or somebody, but there is a small statue of Ganesha, you will think, अरे किसको पहले घुमाऊं? Oh, exactly. Yes or no? Yes sir. अरे पहले गणेश को दिखाऊं या पहले इसको दिखाऊं? आता है ना कंफ्यूजन? How do I know you are getting into that confusion? It is very, very typical. That's how human mind works. क्योंकि वो अग्र पूजा, मतलब he should be worshipped first. Then you think, अरे लेकिन मैं तो शिव का पूजा कर रहा हूं, तो पहले उधर या पहले इधर? And you go into guilt in that also. Yes.
अरे भगवान कभी ये नहीं कहता कि उसको पहले दो या मुझे पहले, आपने वो मूर्तियां बना रखी हैं। वो तो ये कहता है कि मुझे जब दे रहे हो या उसे जब दे रहे हो, एक ही को देख के दे दो। शिव गणेश से अलग है या गणेश शिव से अलग है? नहीं है ना। फिर एक ही जाप जो आपके अंदर चल रहा है, वॉट एवर जाप कम्स विद इन यू, जस्ट गो विद दैट। बट इट्स अरे एवरीबडी सेइंग ओम नमः शिवाय, नो, इट इज नॉट फैशन that everybody is having one kind of hairstyle means I should have the same kind of hairstyle. ये आपके अंदर का जाप है जो आपके सांसों के साथ जुड़ जाए, एक ऐसा मंत्र जो आपके सांसों के साथ चलने लगे। यू डोंट हैव टू डू इट। आपको करना पड़ता है क्या वो? ये अपने आप चलता है? नारायण का जो अपने आप चलते रहता है, तो वो है अजाप अजाप। वो गाड़ी चलाते कभी भी रहते चलते रहता, कंटिन्यू चलते रहता। तो जो चल रहा है बोला नारायण नारायण। तो गुरु जी ये जाप थोड़ा लेट हो रहा तो कुछ प्रॉब्लम? 8 बज रहे थे गुरु जी, 8 to 9 के बिटवीन हो रहा है जाप। थोड़ा माइक पास में पकड़ के बोलिए राजेश जी, थोड़ा मिस हो रहा है। 8 to 9 के बीच में, 8 to 9 के बिटवीन में हो रहा गुरु जी मेरे को डेली है। अच्छा, तो नारायण आपके पास वो टाइम पे विजिट कर रहे हैं, हमको भी पता चल गया उनका टाइमिंग क्या है। सब सुन लो, नारायण का टाइमिंग रात में या दिन में? दिन में गुरु जी। दिन में सुबह 8 से 9 बजे तक दिखाई देते हैं। हाँ। या सुनाई देते हैं? चलो अब से हम नारायण की पूजा वही समय पे कर लेंगे, पता चल गया उनके बारे में। हाँ। राजेश जी। जी गुरु जी। It's not about time, it's not about that God, it's about the relationship that you have with it. आपका रिश्ता क्या है उनके साथ? और जो भी जाप जो पूजा कर रहे हैं बहुत फील बहुत बेटर है। आप लोग शक्ति का मार्ग पकड़ के चल रहे हो और हम शक्ति का मार्ग दिखाते चले जा रहे हैं, उतना ही है। We are just showing you that path of Shakti. Keep on doing. अब रास्ता बता रहे गुरु, लेके आ रहे गुरु जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो कर्म लेके आए हैं उसको तो भुगतना ही है, क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, ये रास्ते में आए बोलो तो आप लोगों की। चलो, थैंक यू राजेश जी। और तैयार शिवरात्रि के लिए? बहुत श्योर का है गुरु जी, रेडी है मैं तो। रेडी है ना? ओके, गुड। सो हरि भाई, मोस्ट प्रोबेबली the place you have already visited. और राजन जी, one amazing thing is the same place also has a stay facility और AC rooms है in the same venue. पद्मशाली भवन। And tomorrow we are going to see the rooms also. If we find it good, then we will call you up and show you, especially people those who are traveling from other states. And quite reasonable because they said these are all AC rooms and well maintained, but we will go and check it personally also. कल कितने बजे गुरु जी? हरि भाई डिसाइड करेंगे वो। Okay, sorry. So place is nearby Padmashali Bhavan only. It's just one lane, this lane and that lane. पास में ही है पूरा। Okay. Okay. So Hari bhai, please help out because all the people those who are traveling from different parts of India, so they have to plan, and especially if somebody is flying from outside, they have also to plan. So actually we are going to book it tomorrow itself. So whoever coming from outstation, please hold your hotel bookings. If the rooms are good, well maintained, then we will book the rooms for you. So hold it for one more day. And the pricing that they told is also quite reasonable, what we found. But yes, we will see that. Yes, yes. We'll talk to you. You can directly talk to those people, so that you don't have to rush from here and there. So we'll find out. Okay. जब शिवजी है साथ में, गुरुजी साथ में, तो टेंशन क्या है? हाँ हाँ, हम लोग खाली
टेंशन लेने के लिए ही हैं यहाँ पे। नहीं लेने गुरु जी, आप तो साथ है तो हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। No problem. Whatever it is, Rajesh ji, we are all together here to celebrate that day, right? ना वो मेरा है ना वो आपका है, वो सबका है. का तो है। The only thing is we have to celebrate it. So be ready for that. That's what we all have to come together and create another magic on that night. Okay. Okay. So thank you, Rajesh ji. Thank you, Guruji. And Suma ji, how are you now? Better? Good? Okay, unmute. Namaste Deva. Bit better. I'm feeling bit better. Okay. So get well completely, not bit better. Many things you people have to do now. Yeah, it's up to you. I left everything to you. Yeah. So whatever you give, I take. Okay, good. Chalo there. Okay. Thank you. So I think Abaji has some more questions. Abaji, please. आबाजी ने डिसाइड कर रखा है कि आज ही शिवरात्रि होगी. गुरुजी एक छोटी सी बात रह गई थी, उसे पूछना है. ये तो बहुत पुरानी मूवी है ना, छोटी सी बात. अच्छा चलो पूछ लो. किसी का अनुभव है, मुझे आपके साथ शेयर करना है. उन्होंने मना किया भाई नाम के लिए, तो मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ. आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि क्या है ये. जब वो जाप करने बैठते हैं तो शुरू में तो गंगा वो जल की आवाज, कल कल की आवाज आती थी उनको ध्यान में, जाप में बीच में. अभी कुछ टाइम से जाप में उनको डमरू की आवाज सुनाई देती है, और डमरू की आवाज सुनते सुनते उनको एहसास नहीं होता कि ये कहाँ से आ रही है आवाज, ये पता नहीं चलता. एक बार कंसंट्रेट किया, जब जाप बंद किया तो वो आवाज बंद हो गई. फिर जाप शुरू किया, वो तो डमरू की आवाज आ रही थी. फिर उनको एहसास हुआ कि शायद मेरे अंदर से ये डमरू की आवाज आ रही. जाप बंद करने के बाद आवाज शांत हो गई, बंद हो गई. तो क्या ये उनको प्रणव की प्राप्ति या अनहद नाद तक पहुंचने का रास्ता है? क्या है ये? बिल्कुल है. थोड़ा सा बिल्कुल है. यही उसका प्रोसेस है. तो इस तरीके से वो धीरे धीरे, मैंने ये भी कहा था ना कि किसी को तबले की आवाज सुनाई देती है तो किसी को डमरू की. अंत एक ऐसा समय आता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ओम सुनाई देने लगेगा. ये सारे आवाजें बंद हो जाएंगी. अच्छा, अभी ये डमरू के बाद अभी और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप बदलेगा. उसको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है. अच्छा, वो कन्वर्ट अपने आप ओम में हो जाएगा? अपने आप कन्वर्ट होगा वो. अच्छा अच्छा, बस ठीक है. थैंक यू गुरुजी, नहीं जानना था. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. प्रणाम गुरुजी. सत सत. थैंक यू. Thank you, Abaji. All our dear divine souls, please gear up, for the time has arrived, and I believe like your practices are going on good. बेल पत्र खा के किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? गुड. जिसको भी तकलीफ हो रही है वो बेल पत्र को पेड़ के पास फेंक दे या तो जल में फेंक दे. शायद बेल पत्र की ऊर्जा वो मंत्र के साथ कुछ ज्यादा हो जा रहा है आपके लिए. So you can put it near a plant or किसी जल स्थल में जा डाल दो उसे. So that would be fine. Baki, all the people, those who are traveling, please let Hari Bhai know, because we have to make so much of arrangements now. So literally waiting to celebrate another day, huh? Together. और इसका पूरा का पूरा भार हरि भाई के ऊपर. एंड हरि भाई का साथ देने के लिए एक महाकाल सेना भी है. So they will all be there. So Hari bhai, you have to
we have to run now because time, another just 14 days to go. हो जाएगा. Chalo. Done. So thank you everyone. So see you on Sunday morning. Okay. तो देखो, some people are taking a big sigh of relief. My God, अच्छा हुआ सुबह है. So thank you for your questions. Thank you for answering those. And go to sleep as Shiva and wake up as Shiva. Don't search for Shiva anymore. Be that. And with this, I just give a break to my voice. Until we meet again. और नीता जी, धन्यवाद इतना सुंदर कविता लिख के भेजने के लिए. और हमें अदिति जी ने बताया कि आपने वो पूरा का पूरा जो गीत है उसे आपने कुछ 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया लिख के. बहुत ही सुंदर कविता थी. धन्यवाद आपका. और हम तो कहते हैं कि ऐसे ही और कुछ लिखते रहे. And she got a first prize today. ये देखो. हाँ, फर्स्ट प्राइज मिला है. देखो नीता जी, जो हमारे लिए, इसलिए मैं लेट ज्वाइन हो गई. हाँ बोलिए, किस में फर्स्ट प्राइज मिला ये पहले बताइए हमको. आज एक क्या बोलते हैं, कवि कट्टा सम्मेलन था. उसमें कविता ये करने का, सादर करने का था कविता. तो उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज मिल गया मुझे. तो बाकी पार्टी का है वो बोल दो. आप कभी भी बोलो सर, पार्टी को तैयार है हम. ये तो लोगों को बहाना चाहिए बस. बहाना नहीं, आइए ना सर. बहाना क्यों? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ. हमको खाना तो बहाना है, मिलना जरूरी है, वो बात है हमारे. हाँ, मिलना जरूरी है. खाना तो बात अलग है. चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. और ऐसे ही आप लिखते रहे. और जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था, याद है ना क्या बनाना है आपको? हाँ, पूरा का पूरा किताब, पुस्तक, बुक प्रकाशित करने का. हाँ, तो पुस्तक को प्रकाशित करना है आपको. और कब कर रहे हो ये बताओ. सर, जब आप बोलेंगे शिवजी. अब ऐसा मत बोलिए, मैं सिर्फ 1 महीने का टाइम दूंगा फिर. नहीं, टाइम आने का. टाइम जब आएगा तब करेंगे. नहीं, टाइम आपको डिसाइड करना है, तो आप डिसाइड कर लो. बाकी वो कैसे होगा वो हम सब देख लेंगे. तो कब करेंगे बोलिए. देखेंगे सर. देखिए, माइंड भाग रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है. चलो एक काम करते हैं, संडे के दिन बताइएगा मुझे किस दिन करना है. ठीक है. ठीक है. चलो डन. देखो कितना खुश हो गए. बोले चलो कम से कम संडे तक का तो टाइम मिला. ऐसा नहीं, मुझे और भी इतना मन में ये नहीं आ रहा है फिक्स कि करेंगे ऐसा करके. आज अप्पा राव जी ने सुबह एक मैसेज भेजा था. बाय सर्टन थिंग्स not because you want it, just like that. Buy it just like that, because some people choose to not beg. यही था ना अप्पा राव जी? This was so that was the write up. तो वैसे ही नीता जी, कभी कभी अपने लिए नहीं करना है, कभी कभी बस इसलिए करना है कि आगे कोई पढ़े और उसको आगे सीखे, कुछ समझे उससे. या तो कम से कम आपका वो लिखावट किसी के लिए प्रेरणा बने और वो उसे देख के उसको भी लगे कि मैं भी लिख सकता हूं या मैं भी लिख सकती हूँ. उसके लिए लिखना चाहिए. बराबर. ठीक है. चलिए नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. बस आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें. धन्यवाद सर, आपकी कृपा है. थैंक यू so much.